Yes, good morning, Jen. We both heard 1 2 3. Please, 1 2 3. Please rename yourself. Let me know from which school you are. Yes, good morning, Anjum. Jen V Chitradurga, Varangal. Sri Jen V VZM. Students, please rename yourself. Let me know from which school you are. And Chitradurga, Haveri, Morbi. Yeah, I'm very happy to see that Morbi always joins first, exactly 10 minutes before. मतलब अभी क्लास के लिए 10 मिनट है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं. So beautiful to see that, you know. Yes. Good morning, everyone. Good morning. Okay. So I can see most of you are joined on time today. So we are going to start the class on time. Okay. Yeah. So before getting into the class, I'm going to launch a technical poll. Just let me know if I'm perfectly audible and visible to you or not. Okay. So everybody had your breakfasts? I hope you had. As it is a Sunday, there must be something special. Okay. First, let me share my screen. Oh, what happened? Hmm. Okay. Please let me know if I'm visible to you, audible to you. Is the screen visible to you? Everything is sorted, right? Yes, good morning, Chitradurga. Good morning, Anjum. Good morning, Varangal students. सबको good morning, good morning. Okay. Okay, beta, then I can see everybody has clicked on yes. Then without any delay, we are going to start now. Okay. So मैं दिख रही हूँ, पीपीटी दिख रहा है, आप तो मुझे नहीं दिख रहे. If you turn on your videos, it will be very happy moment for me. मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं लैपटॉप को नहीं पढ़ा रही हूँ, बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ. क्योंकि this is the problem in the online classes. I feel like I'm teaching to laptop, but I miss my offline teaching. बट क्या कर सकते हैं, अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो मुझे फील होगा कि यस आई एम टीचिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स. ओके. चलो तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. या So, in the last 2 weeks, we have completed two chapters. One is Living World, and another one was Biological Classification. From those chapters, I have literally took the previous year questions. हमने कोई भी extra question नहीं किया था. We have solved only previous year questions. But for this chapter and the Animal Kingdom chapter, what I'm going to do is first we are going to understand the concepts well, and then we are going to solve the previous year questions. Like how, ma'am? What are you going to say? But in this class, I'm not going to solve the previous year questions, but I'm going to solve the, model questions and, mock questions so that you should get, familiarity with everything related to that concept. Okay, with this chapter. ठीक है. तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो मैम फिर हम कब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सी ये हम लोग बेटा हमको बहुत टाइम मिलेगा आगे भी. ओके स्टिल यू आर इन 11th वी गेट द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू गो टू 12th फिर वहां पे भी रिवीजन होगा बहुत कुछ होगा. तो हम लोग बिल्कुल करेंगे. ओके एक सेशन उसके लिए भी मैं रखूंगी बट आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट plant kingdom and animal kingdom is kind of a confusing chapters for the students, most of my students. So that's why today we are doing this questions only, question solving only, but they are not previous year questions. उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखूंगी मैं. ठीक है चलो अभी we are going to start the class. Yeah. So there's a first question on the screen. Okay. I hope that you have read and come Plant Kingdom. अगर आपको हर कोने कोने का स्टेटमेंट पता है तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. ओके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है चलो अगर आपने ये आंसर कर लिया एंड तक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इजी रहेंगे. ओके चलो. So flagella are absent in kelps, seaweeds, red algae and blue-green algae, green algae and brown algae. So yes, Genvi Morby has said, please don't send it to everyone. Send it directly to me. Okay, रुको मैं इसको. हाँ अभी मुझे ही आएगा. आप किसी को भी भेजो मुझे ही आएगा.
ओके, वेरी गुड मॉर्बी, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ, please try to answer in the chat box also. Meanwhile, I'm going to launch the poll. Let me know, what do you think of this question? Think. You have to think. Okay, kelps. Where do kelps come? Seaweeds. Okay, where do seaweeds come? Okay, flagella किन में होता है, किन में नहीं होता है? Okay, red algae and blue green algae and brown algae. Okay, if you remember that chart, okay, that is given in the page number. Okay, आपका एक चार्ट दिया हुआ है ना, उसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा. इन द 33 पेज नंबर में एक चार्ट दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Yes. Okay. As I can see, most of you have chosen the correct answer, and only Morbi has answered me in the chat box. We will see now. Okay. तो यहाँ पे देखो बेटा, as you can see, flagella are absent. Okay, totally absent in. अब इसको आंसर करने के लिए you have to look at the chart. Okay, if you see this chart, there are three classes: chlorophyceae, which are called as green algae, and phaeophyceae, brown algae, and the rhodophyceae, that is red algae. Okay, so among this rhodophyceae is the one with flagella are absent. Okay, यहाँ पे देखो 2 to 8 होंगे flagella, equal हो सकते हैं. In the phaeophyceae there might be two number but unequal lateral. Okay, I hope that you understand what is lateral and apical. Apical means जब flagella टिप से निकलता है. ओके, जब टिप से निकलता है तो उसको एपिकल कहते हैं. अगर ऐसे साइड से निकलता है तो उसको हम लैटरल कहते हैं. ओके, वी कॉल दैट एज लैटरल. Okay, so in rhodophyceae, that is red algae, both the types are absent. Okay, no flagella at all. Okay, now if you see the option, we are familiar with the red algae now. What about blue green algae? But blue green algae are nothing but the cyanobacteria. If you remember, we have studied nostoc, we have studied anabina. Okay, तो उसमें आपको flagella मिला था? No, there also you won't see the flagella. Okay, so that is why it is very clear and easily you can tick it out that 3 is the answer to this. Okay, am I not audible? Okay, Haveri says I'm not audible. Is this true? Can everybody hear me? Okay, I think my network is quite good, not that bad. Please write it in the chat box. Am I audible? Okay, Anjum says yes. So I have rebooted it. तो हो जाएगा अभी. सुनाई देगा हवेली आपको. And please make sure that your internet is also good. Okay, from your end, if the internet is good, then there won't be a problem. Okay. Okay, Haveri says okay now. Okay, beta. Chalo. So this is the answer. Red algae and the blue green algae. I hope you remember Nostoc and the Anabina. उनमें बिल्कुल flagella absent था. Okay, next question. Meiosis in Spirogyra, Eulothrix, Chlamydomonas, and most of the algae, that is thallophytes, is. Okay. First of all, you need to know what is mitosis and meiosis, and then you need to know these all organisms belong to which class. आप easily बता सकते हो बेटा, Spirogyra, Eulothrix, and Chlamydomonas. These are, chlorophyll pigment containing. ठीक है, तो we call them as. Yeah, anybody wants to write? सारे क्लोरोफाइसी में आते हैं. ठीक है, चलो. अभी आपको मैं ये बता देती हूँ बेटा. एक मिनट बताने से पहले लेट मी लॉन्च द पोल. लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द आंसर. ओके, आई हैव लॉन्च द पोल. प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर इन द पोल. समझो बेटा, व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस. एंड मियोसिस हो रहा है तो क्यों होता है, कहाँ पे होता है. ठीक है. वेरी गुड, नाउ आई कैन सी आंसर्स आर कमिंग. फिर भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में. कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ. प्लीज म्यूट एवरीवन, म्यूट योरसेल्व्स. तिनसुकिया असम, you have not muted. Please mute. Okay. Chalo. Okay, Morbi, you are correct.
Chalo, I have given enough time. Most of you have chosen it as option B, which is actually, I'll tell you, correct or not. Okay. So first of all, as I told you, beta, in mitosis, okay, आप पढ़ोगे beta in the chapter of cell cycle and cell division. Okay, so when we say mitosis, okay, mitosis is called as equational division. That means if the parent cell is diploid and the daughter cells will also be diploid, that means there is no reduction in the chromosome number. Okay, mitosis is called as equational division. If parent has the diploid number of chromosomes, daughter cells will also have diploid number of chromosomes. If we talk about meiosis, okay, if we talk about meiosis, here what happens, beta? This is commonly called as reductional division. What is reductional division? So reductional division means there is a reduction in the number of chromosomes. ठीक है, chromosomes के number में reduction होगा. That means if the parent has the diploid number of chromosomes, the daughter cell would get haploid. Okay, and please remember that meiosis occurs in two stages, meiosis 1 and meiosis 2. So, with the help of these two stages, at the end of meiosis, we get the four haploid daughter cells. Okay, so meiosis में क्या होता है बेटा? It is a reductional division where you will get the four haploid daughter cells and they are haploid. Whereas in the case of mitosis, which is equational division, there the क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट्स इज इक्वल टू द ऑफस्प्रिंग और द डॉटर सेल्स. ठीक है, तो अब आप मुझे पूछ सकते हो मैम माइटोसिस किधर होता है. माइटोसिस बेटा हर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है. जैसे आई टेक इट एज अ एग्जांपल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, जहां कहीं पे भी वुंड होता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो वी कॉल इट देम एज सोमैटिक रीजन. ओके, एक्सेप्ट द जर्म सेल्स और द रिप्रोडक्टिव एरियाज. तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा होता है मायोसिस. क्यों? बिकॉज इन द गोनाड्स दीज structure will produce the gametes. If we talk about the animals, we have the sperm and egg. Similarly, it goes holds good for the plants also. Okay, so meiosis occurs only in the germ cells, okay, to produce the gametes, but mitosis occurs every part of the cell. अगर मैं प्लांट की बात करूं तो रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा, लीफ में भी होगा, फ्लावर में भी होगा, हर जगह पे होगा. ओके, आप बेटा प्लांट्स में माइटोसिस को मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से कंपेयर कर सकते हो. ओके, सो आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोस सेल्स हु हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. ओके, so they have the capability to divide. Yes, yes, Janvi Pedavegi. Hello. Okay. So this is the explanation that I wanted to give you. Now, what it is asking here is meiosis in Spirogyra, Eulothrix, and Chlamydomonas. अब इसके लिए बेटा you see this chart. Okay. So all of those are belong to what? What are these? Can anybody tell me? Spirogyra, Eulothrix, Chlamydomonas. These are bryophytes, pteridophytes, algae. Okay. Gymno, angiosperm. क्या है ये? What are these? Okay. It's very easy to say. Okay. These are algae, right? Spirogyra, Eulothrix, Chlamydomonas. These are algae. Okay. So algae belong to the which? Yes, very good, Haveri. So these belong to the which cycle now? If you see here, it belongs to the haplontic. Okay, haplontic में belong करता है. अब देखो बेटा, it is given in your NCERT only. I have taken your NCERT diagram. So zygote is diploid. Okay, so zygote is diploid. It is undergoing a meiosis, as I have told you. It will undergo in two stages to give the four haploid daughter cells. अब हमको क्या मिलेगा? So after meiosis, we always get the gametophyte. That means it is the structure through which gametes are formed. ओके, तो अब ये जो गैमेटोफाइट बन रहा है या फिर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है टू अल्टीमेटली गेट द गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड एज गेमेटिक. ओके, वी कॉल दैट एज गेमेटिक. ओके, हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2. ओके, सो meiosis will eventually gives rise to the gametes, ultimately with the eventually formation of गेमिटोजेनेसिस. सी व्हाट इज गेमिटोजेनेसिस? आपको बेटा समझा दूं मैं, वर्ड की मीनिंग में छुपा होता है. गैमीट वी ऑल नो, ओके, आइदर इट इज अ मेल हैप्लॉइड और द फीमेल हैप्लॉइड गैमीट. बट व्हेन वी से जेनेसिस, जेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग और मेकिंग ऑफ समथिंग. जब हम गेमिटोजेनेसिस कहते हैं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, तो मियोसिस के बाद हमको गैमेट मिलता है, हेंस गेमेटिक. ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Agarophytes, okay, are agar yielding red algae. This agar is used in medicines, ice creams, but chiefly in culture media to make them semi-solid. Is to obtain from which red algae?
ओके, तो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि अगार मिलता है, हम सबको पता है। ओके, यू ईट इट इन जैम्स एंड चलीज एंड आइसक्रीम्स एंड इवन इन द कल्चर मीडिया। ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो कल्चर मीडिया, लेट मी टेल यू बेटा, आपने देखा होगा पेट्री डिश। ओके, पेट्री डिश तो हर किसी ने देखा है लैब्स में। सो दैट पेट्री डिश विल हैव, okay, that petri dish will have, okay, this much of space. Inside it we will pour the medium. Okay, it is called a nutritive medium. Oh, ma'am, what nutritive medium is consisting of? It will have agar for the solidifying, and it will have the, dextrose, good amount of pH, and the inoculum, and all those things will be present. So सारों को मिला के यहाँ पे हम डालते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग, यू नो बैक्टीरिया का या फिर अलगी का, हमको जो को भी ग्रो करना है उसका ना, हम एक छोटा सा इंक्यूबेट करके छोड़ते हैं, इनोक्यूलम डाल के। वो सारे बेटा माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड्स हैं, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट कल्चर मीडिया मीन्स इट इज द वन दैट इज यूज टू मेक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि देर आर सो मेनी फंगाई, देर आर सो मेनी बैक्टीरियाज। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए वी नीड कल्चर मीडिया। ओके, सो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए अगार इज नीडेड। सो नाउ इफ यू सी द ऑप्शंस हियर, okay, gelidium and gracilaria are the ones that are agar yielding. Okay, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, this is directly taken from एनसीईआरटी. What is taken, that gelidium and gracilaria are responsible for what, making jams and jellies, that is agar yielding. Okay, अब बेटा, अगर gelidium and gracilaria were together, you could have chosen that, but here it says gelidium with teres. Okay, so teres belongs to pteridophyte. Okay, teres belongs to pteridophyte, so hence A is a wrong option. Okay, Gracilaria and agaricus. You know, agaricus is a mushroom. It is a button mushroom. It is a fungi. Okay, definitely it does not give the agar. That means gelidium. आपको जो भी जेली मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। Okay, hence here B is also the wrong option. अब यहाँ पे होता क्या है, many of my students get confused कि अच्छा agaricus है तो might be agaricus will give the agar. No, no, my dear students. Agaricus is just a mushroom, okay, which belongs to the fungi group and the mycota. Okay, so उसका अगार के साथ, जेल्स के साथ, जैम्स के साथ लेना देना कुछ नहीं है. So that is why answer for this question is 4, all wrong. Okay, very good everyone. I can see JNV Panchavati, Pratham, Morbi, Rajkot. Beta, I hope now you got the answer. So people have answered. I can see, very good. So 4 is the answer. Okay. If gelidium and gracilaria were together, you could have chosen that, but it is not given, so we are not choosing. Very easy question. Okay, I'm not giving much time to this question. Isogamy involves. Arey Vishakhapatnam, beta, first read the options. Okay. I think you have answered for the last question, no problem. Fusion of two morphologically similar gametes, fusion of two morphologically similar but physiologically different gametes, fusion of two gametes produced by same gamete angium, fusion of two dissimilar motile gametes. बहुत ही easy है. Very good Haveri, very good Yanam. Yes, Panchavati, perfect. Okay, your answers are correct. So let me launch a poll for this question. क्योंकि easy question है, I can tell that everybody will answer it correctly. Okay, if you remember, there are 3 types: isogamy, anisogamy, and oogamy. Okay, so if you understand the terminology, see, let me tell you, biology is very easy if you start splitting and understanding the terms. Okay, यहाँ पे देखो बेटा, isogamy. Iso means same. Iso means same. Gamy means marriage or fusion. Okay, marriage या फिर fusion को कहते हैं बेटा gamy. Okay, समझ में आ रहा है? तो very good. I can see everybody has answered it correctly. So I am ending the poll. तो बेटा isogamy में क्या होता है देखो. So here you can see one is considered as male, another one can be considered as female. इसी को इन्होंने प्लस माइनस में दिया है. ठीक है, तो यूजुअली बेटा मेल एंड फीमेल रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है. एट दैट सिनेरियो वी कंसिडर एज वन एज प्लस एंड अनदर वन एज माइनस. ओके, so very good Aryan bhai, very good all the students, user Rajkot, perfect. Okay, so isogamy means these are two gametes which are morphologically similar but also physiologically similar. Physiologically, morphologically, they have to be similar. Okay, and isogamy means they are morphologically dissimilar. Okay, oogamy में क्या होता है बेटा, one is motile, another one is non-motile. Okay, so if you now look into the options, the fusion of two morphologically
This is the correct option. Let's look at the other structures also. I mean, other statements. Fusion of two morphologically similar but physiologically different. No. Isogamy is physiologically similar. Hence, this is wrong. Fusion of two gametes produced by same gamete enzyme. This is not possible. हो सकता है कि कभी रेयर केसेस में हो भी जाए, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट यूजुअल, नॉट वेरी कॉमन. ओके, सेम गैमेट एंजाइम से दो गैमेट्स नहीं आते हैं. बट अ गैमेट एंजाइम इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच गैमेट अपीयर्स. ओके, जिसमें गैमेट रहता है. ओके, तो यहाँ पे सेम गैमेट एंजाइम के दो गैमेट्स का फ्यूजन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. हेंस दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. Fusion of two dissimilar motile gametes, that is anisogamy. So hence answer for this question is 1, and I can see most of you have answered it correctly. Very good, Dahod. Okay, next question. Space algae rich in protein, that is 50%, vitamin A, E, C, which can be possibly used in space flights. Okay, तो space flights को किसकी जरूरत है, मतलब क्या है वो, अब मुझे बता सकते हैं अभी. I'm not going to launch poll for this. To answer this question, you need to know two, organisms. You need to know two organisms. So options आप देख लो बेटा. Very good Morbi, very good Haveri, very good Rajkot. Okay, options are Cara, Volvox, Chlamydomonas, Spirulina. Okay, what is Cara? Cara is a algae, okay, which looks like this. Okay, कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा रहता है ये. Okay, so it will have many branches. तो ऐसे करके branches रहेगा. तो इनमें ना ऐसा flower like कुछ appearance रहता है. Okay, so like this. So it will look somewhat like this. If you go and look it in the Google, you will get this. Okay, this is a Cara, but definitely not by the astronauts. Okay, तो ये बिल्कुल wrong option है. Okay, Volvox is an algae which is a colonial algae. Okay, ये colonial algae है, तो ये भी हमारा आंसर ठीक नहीं है. ओके, क्लामाइडोमोनास इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये क्लामाइडोमोनास कुछ ऐसा होता है बेटा. ओके, इट्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक फ्लैजेला भी, ऐसे एक से दो फ्लैजेला होते हैं. ओके, ऑर्गेनिज्म को ही. ओके, सो देयर इज पॉसिबल कि फ्लैजेला हो या ना हो, बट इट इज अ सिंगल सेल्ड. Okay, so हमारा जो chlamydomonas है, it is a single cell. But if you see this Volvox and Cara, these are not single cell, not unicellular, but they are multicellular. If we talk about the spirulina, spirulina, the name is given because it looks spiral. Okay, it looks something like this. Okay, but अभी आप देख लो, chlorella and spirulina, they are used by the space travelers. Okay, क्यों space travelers से use होता है ये? Because these are single celled proteins. Okay, so spirulina is used by the space astronauts as a source of food. They will take it in the form of capsules. Okay, जब वो space में होते हैं तो they will take it in the form of capsules. Chlorella is also known as space algae as it releases oxygen. Okay, so this much you need to know about the spirulina and chlorella. If there is an option including both chlorella and spirulina, you can choose that also. अगर वैसा ऑप्शन है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पिरुलिना दिया है हमारे ऑप्शंस में, hence we will choose D as the correct option. Okay, very good user, very good Panchavati everyone. Okay, so next question. Maximum photosynthesis is carried out by. Okay, so in this earth you can see photosynthesis is a common process. Okay, everybody is familiar that wherever the chlorophyll pigments are present, chloroplasts are present, they are going to do the preparation of food. Okay, very good. I can see many of you are answering it correctly. So I'm happy to see. Okay, but you have to answer me that there are land plants, we are quite familiar with them, and there are algae also. They also does the photosynthesis. Okay, you agree with me, right? Algae have the chlorophyll pigments, they will do the photosynthesis, but you have to choose maximum कौन करेगा. Okay, I can see many of you are answering it correctly. कुछ बच्चे इधर उधर गलत भी हो रहा है. कोई बात नहीं, अभी solution देखेंगे तो you will get the answer. Okay, so Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, these are the examples of algae. We know that. Okay, and very specifically, these are green algae. Okay, that is, आप इनको बता सकते हो कि green algae है. ठीक है, चलो. अब most of the photosynthesis, that is 80%, takes place on this earth is carried out by algae present in fresh water and ocean water.
ओके, जब आप एकदम से फर्स्ट देखते हो ऑप्शंस, आपको लगेगा कि लैंड प्लांट्स, क्यों? क्योंकि देखो धरती में कितने लैंड प्लांट्स है, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि लैंड प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. Okay, why? Because apart from land, our earth, if you see the globe, it has a lot more amount of water. मेराइन, कितना मेराइन है यार, अरेबिक सी है, ठीक है, फिर वहां पे इंडियन ओशन है, ये सारा आप देखो इधर उधर हर जगह सी ज्यादा है हमारे पास. और इसके अलावा फ्रेश वाटर बॉडीज भी वी हैव मेनी. ओके, लैंड भी है, तो टोटल आप कंपैरिजन करोगे ना, तो वाटर बॉडीज में जो अलगी हैं वो देती हैं मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, मेड बी अ फ्रेश वाटर, मेड बी अ ओशन वाटर, बट algae will give the, more amount of oxygen by doing the photosynthesis. Okay, so you can choose this as option 3. Okay, that is both A and B. Okay, A and B को मिला के C option आपका करेक्ट रहेगा. ठीक है बेटा, land plants will do the photosynthesis, but comparatively the water bodies will do the maximum. Okay. Okay, admin, please stop requesting to record the meeting. Okay, because we have already done the YouTube links, तो YouTube links में already record हो रहा है, there is no need to record. Please stop asking for the permission. Okay, yeah, चलो. Yes, Karnul, very good. हाँ, next question. Sporophytic structures in bryophytes is found to be. Okay, देखो bryophytes you are very familiar. Okay, liverworts, mosses. Okay, तो इसमें यहाँ पे आपको पूछा गया है कि sporophytic structure in bryophytes is found to be totally dependent on gametophyte, partially dependent on gametophyte, both A and B independent from gametophyte. Okay, so बेटा ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. इफ यू सी द एनसीईआरटी स्टेटमेंट, आप अगर एनसीईआरटी निकाल के देखोगे तो इट हैज रिटन समथिंग. अब वो देखोगे ना तो एकदम यू विल गेट द आंसर हियर. यस, as I can see, most of you are answering it wrongly, but no problem. I'm giving you the chance. I'm launching the poll. Please make sure that you answer in the poll also. I'll share the result. देखते हैं. Once you choose the option, then I'll share the results with you. This question is directly taken from NCRT. NCRT का statement है ये. Okay. So I have given enough time. I'm ending the poll and I'll share the results. तो देखिए आप, 44% students have chosen option A as the correct one and B 11% लोगों ने choose किया है. C is chosen by 33% people and D is chosen by 11%. मतलब everybody has chosen something or other. Okay, चलो. तो बेटा यहाँ पे आप देख लो, जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है ना इन ब्रेयोफाइट्स, इट इज फाउंड टू बी टोटली, पार्शियली, बोथ एंड इंडिपेंडेंट. इससे आपको एक चीज पता चलती है. ओके, देखो यहाँ पे ब्रेयोफाइट इज अ फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट थैलॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी है बेटा वो फोटोसिंथेटिक है. इट इज अ हैप्लॉइड गेमेटोफाइट. ओके, सो इट इज द डोमिनेटिंग वन, विच gametophyte. Okay, now the dominant stage alternates with the multicellular sporophyte which is very short lived. जो स्पोरोफाइट है बेटा वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. ओके, बट जो गेमेटोफाइटिक है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है. ठीक है, चलो अब फॉर एंकोरेज एंड न्यूट्रिशन. ओके, एंकोरेज मतलब फॉर द अटैचमेंट टू एनी ऑफ द सबस्ट्रेटम, और कोई भी एक रॉक हो गया, कोई मिट्टी हो गई, तो उसको एंकोरेज होना है ना, उसको लगा के रखना है. सो दैट इज एंकोरेज, अटैचमेंट. एंड द न्यूट्रिशन, द स्पोरोफाइट इज फुल्ली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट. Okay, so fully or partial. It is totally based on species to species. Okay, some people have chosen fully.
ओके, सी दैट इज नॉट द सिनेरियो। आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ आपने जितना पढ़ा है हाँ फुल्ली होगा, लेकिन देर आर सम स्पीचेस विच डोंट टेक फुल्ली, ओके, फुल्ली फ्रॉम द गेमिटोफाइट. Okay, so some are there which are doing it as a partially. Okay, they depend only, half of the times from the gametophyte. Okay, so this pattern is represented by all bryophytes. So here answer for this question is both A and B. Are you understanding the complexity of the questions? You might feel, मैम ये तो बहुत easy questions है, आप क्यों ऐसे करा रही हैं? बेटा यही easy questions ले डूबेंगी. ट्रस्ट मी. ओके, विल फील लाइक हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, शायद 3 होगा, शायद 1 होगा. ओके, तो थोड़े में कॉन्सेप्ट जान के भी आप रॉन्ग हो जाओगे, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी परफेक्ट. ओके, सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आइदर फुल्ली और आइदर partially. Okay, next question. The filamentous structure formed by the germination of spore from which a typical gametophyte develops is called gemma cup, sporophyte, protonema, prothallus. No, no, Yanam, take some time and then answer. इतना जल्दी आपने आंसर किया, that is not correct one. It is a filamentous structure formed by the germination of spore. ओके, एक स्पोर है, उसका जर्मिनेशन हुआ है, और वो जर्मिनेशन होके क्या बन रहा है, फ्रॉम विच अ टिपिकल गैमेटोफाइट इज डेवलपिंग. ओके, फ्रॉम दैट जर्मिनेशन ऑफ अ स्पोर वी गेट द टिपिकल गैमेटोफाइट. ओके, तो वो क्या स्ट्रक्चर है, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर कौन सा है? द होड एंड Yanam, please look at the options once again. Ha, Yanam, now you are correct. Karnool, yes. Yes, Yanam. Haveri, I think you need to look at the options once again. Okay. The Hod, you also. Yes, HP correct. Okay. So as you can see, most of you are answering it correctly. तो देखो बेटा मैं क्या बता रही हूँ ना आपको. Okay, so if you see this life cycle of bryophytes, okay, this is a life cycle. See, it all starts with the gametophyte. Okay, it's the dominant गेमिटोफाइट. ठीक है, अब ये गेमिटोफाइट क्या होगा, यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है. ठीक है, सो मेल और फीमेल एग एंड स्पर्म दे फ्यूज टुगेदर, दे मेक द फर्टिलाइजेशन एंड वी गेट द जाइगोट. सो दिस जाइगोट विल अल्टीमेटली गिव द स्पोरोफाइट. ओके, ये स्पोरोफाइट है, दैट इज डिप्लॉयड जनरेशन. ओके, अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर फिर स्पोर्स होंगे, वो स्पोर्स क्या करेंगे बेटा, अगेन जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द यंग गेमिटोफाइट. अब ये जो यंग गेमिटोफाइट है ना, ये बनने से पहले क्या बनता है, इट फॉर्म्स प्रोटोनिमा फर्स्ट. ओके, तो बेटा आप मॉसेस में आप निकाल के देखोगे ना, इन द एनसीईआरटी विल गेट इट. ओके, सो फिलामेंटस पहले प्रोटोनिमा आएगा, फिर वो एक गेमिटोफाइट बनने के प्रोसेस में चला जाएगा. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस स्पोर्स अपॉन जर्मिनेशन फर्स्ट दे विल मेक द फिलामेंटस स्ट्रक्चर. Okay, that is a typical gametophyte. Okay, so the answer for this question is protonema. Now, for those students who are getting confused between prothallus and protonema, उनको मैं आगे चल के बताऊंगी. I'm going to give you the difference. But देखो, sporophyte is what? Sporophyte is the one which gives the spores. Okay, देखो बेटा नेम ही सजेस्ट कर रहा है sporophyte. Phyte means it is the structure which hold the spores. ओके, फाइट इज अ स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द स्पोर. बेटा जो फाइट है ना वो यूजुअली प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में आता है. ओके, प्लांट में आपको अगर बताना है कि हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इट इज होल्डिंग समथिंग, तो यू कैन टेक इट एज अ फाइट. ओके, देन गम्मा कप तो बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, तो एक गम्मा कप अलग हो जाएगा, इट विल मेक एन इंडिविजुअल बॉडी. ओके, सो गम्मा कप में कोई वहां पे आप ये जो चीजें हैं इसको बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Protonema is that filamentous structure which will make the young gametophyte. Okay, now you can see the difference. What is protonema? Protonema is a filamentous thalloid structure, okay, of the gametophyte in mosses and some liverworts. Okay, it's a thread-like structure, the first stage of gametophyte development in mosses and liverworts. I told you right कि अभी जो यंग गेमेटोफाइट हो रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेज है, वो पहले फिलामेंटस बनेगा. यस कडप्पा, यू हैव रेज्ड हैंड. एनी डाउट्स? You have raised hand, Kadapa. Okay, the first stage protonema, and then it will become a complete gametophyte. Okay, so you can see this. This is a gemma cup. ठीक है, ये सारा एक gemma cup है. ठीक है, so look how beautiful it looks, right? Okay, अब prothallus क्या है? Prothallus is the gametophyte of pteridophytes.
ओके बेटा, इसमें डिफरेंस इतना ही है, प्रोटोनिमा बिलोंग्स टू द गेमी ब्रायोफाइट्स एंड प्रोथैलस बिलोंग्स टू द टेरिडोफाइट्स। ओके, जो टेरिडोफाइट्स का प्रोथैलस है वो यूजुअली हार्ट शेप में होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, इट लुक्स लाइक अ हार्ट शेप, दैट मीन्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। एंड द गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट है। ओके, गेमिटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज प्रोटोनिमा एंड द गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज प्रोथैलस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, कंफ्यूजन नहीं कर पा रही हूँ, कंफ्यूजन को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रोटोनिमा इज द आंसर, प्रोथैलस भी क्या है, यू अंडरस्टूड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन ब्रायोफाइट्स। भी अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट आई वांट टू नो दैट यू आर अटेंटिव और नॉट इन द क्लास। अभी just now I told you answer for this question. You tell me now in the chat box, which is formed after germination of spore in bryophytes. अभी मैंने एक साइकिल दिखाया था आपको। हाँ, very definitely we get the gametophyte. Okay, मैं wrong नहीं बोल रही हूँ, but you have to choose which is more correct. आपको लगेगा कि हाँ मैम गमेटोफाइट भी ठीक है, प्रोटोनिमान भी ठीक है, लेकिन देखो ये पूछ रहे हैं कि विच इज फॉर्म्ड आफ्टर जर्मिनेशन। ओके, तो जर्मिनेशन होते ही पहले क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा है, प्रोटोनिमा फिर डेवलप करके एक एंगेमिटोफाइट बनाएगा। तो अब इसमें आपको चूज करना है कौन सा है। आपको लगेगा कि वन है, टू है, थ्री भी है, तो कंफ्यूज तो होना है। तो डोंट वरी, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज चूज करना बेटा। इफ यू सी द योर एनसीईआरटी तो उसमें लिखा है, अभी मैं कौन सा पेज नंबर मुझे याद नहीं है, बट यू कैन सी। ओके, no, Marvi, I think you have, you have got confused. Please read the NCERT once again. Okay, बेटा, अब दे एक मिनट मैं आपको बता ही देती हूँ। Okay, look at the page number 36, Morbi. Morbi is saying Protonema isn't pteridophyte. No, it is in bryophyte. If you look at the page number 36 in the paragraph mosses, तो mosses देखो बेटा, mosses belong to bryophytes. Mosses have liverworts, sorry, bryophytes have liverworts and mosses. ओके, नो प्रॉब्लम और भी ओके। सो जो प्रोटोनिमा है बेटा वो ब्रायोफाइट में आता है। वेरी गुड, ओके। चलो, सो टू इज द आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच टाइम हियर। ओके, यू शुड नो कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ओके, एम्फीबियंस कहते हैं ना इनको, क्यों, क्यों कहते हैं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड पंचवटी, वेरी गुड कर्नूल, वेरी गुड राजकोट, HP, the Horde, Haveri, very nice, very nice. So everybody knows that because of water. Okay, water is essential for the sexual reproduction. ठीक है, तो sexual reproduction of bryophytes need water, hence these are called as amphibians. Okay, चलो, तो the thalli of liverworts are generally very good HP. Yes, Yadgiri, nice. Need water for fertilization. Yes, Karnool, you are 100% true. Yes, Haveri, okay. The thalli of liverworts are generally, अरे यहाँ पे फिर आप आके अटकोगे, मुझे पता है। ओके, देखो थैले इज व्हाट, इफ यू सी द लिवर वर्ड्स यू कैन सी मार्केंशिया, यू कैन सी रिक्सिया। ओके, सारे आपको कैसे दिखेंगे बेटा, दे लुक समवॉट लाइक दिस। ओके, तो ऐसा थोड़ा रहेगा, यहाँ पे नीचे से ऐसे राइजोइड्स आएंगे। ओके, इट माइट हैव अ गेमा कप ऑल्सो, यहाँ पे वहां पे गेमा कप भी हो सकता है। ओके, इफ यू सी दिस व्हाट डू यू फील, is it a branched or unbranched, dichotomously branched or polybranched? Okay, I have, okay, okay, Rajkot says, हाँ नहीं वो, अच्छा Kalburgi, you are correct. The Horde, I think you need to look at the options once again. Rajkot, correct. Okay, Karno, look at the options once again. Okay, तो आप लोग जो आंसर कर रहे हो ना, let me tell you, unbranched, branched, dichotomously branched, polybranched. Unbranched means what? There is no branching. That means a single line. जैसे ऐसा कुछ linear आपने draw किया, this is unbranched. No branching, एकदम straight. ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, थैली ऑफ द लिवर्स कैन नॉट बी अनब्रांच्ड। ओके, ब्रांच्ड है, यस आई अग्री, थैली ऑफ लिवर्वर्ट इज ब्रांच्ड, बट वेरी स्पेसिफिकली इफ आई हैव टू से इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, मतलब इसमें दो ब्रांचेस होते हैं, वन एंड टू।
ओके, वन एंड टू, अगर ऐसे दो ब्रांचेस होते हैं वन एंड टू वाले, वी कॉल देम एज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। नाउ व्हाट इज पॉली ब्रांच्ड? पॉली ब्रांच्ड मतलब देखो यहाँ से भी एक ब्रांच निकला, यहाँ से भी निकला, इधर भी निकला, उधर भी निकला, तो दिस काइंड इज पॉली ब्रांच्ड। बट थैलिया ऑफ लिवरवर्ट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तुम यहाँ पे देखो, आपको पता चल जाएगा। Two branches of equal thickness are formed at every point of branching in case of dichotomous branching। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। मतलब एक ही पॉइंट से बेटा दो ब्रांचेस ऐसे निकलेंगे ऑफ इक्वल थिकनेस। ओके, एंड इट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव फीचर है ऑफ लिवरवर्ट्स इन ब्रायोफाइट्स। आप रिक्सिया देखो, मार्केंशिया देखो, यू विल लुक इट समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज वन एंड दिस इज टू। ओके, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। Okay, so as you can see this above nahi, below diagram, okay, they do not have true roots, stem and leaf। okay, true root, stem and leaf नहीं है, उनके जैसे structures हैं। okay, rhizoids हैं which are root like। okay, तो ऐसे structures हैं but they are not true structures। तो आप देखो बेटा, this is known as thallus which is dichotomously branched। very easy question, इसमें कुछ difficult है ही नहीं। okay, very good। not audible correctly, clearly। Haveri, now I can tell you that it is internet problem from your end। आपकी तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम है बेटा, सबको सुनाई दे रहा है। प्लीज लुक इन टू द इंटरनेट वंस अगेन, योर वाईफाई को आप ठीक कीजिए, कोई टीचर की हेल्प लीजिए। ओके, चलो विल मूव अहेड नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यस हावेरी, गुड। विच इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट? ओके, यू हैव टू टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। अब आप पूछे, मुझे पूछोगे कि मैम ये कैसे क्वेश्चंस हैं, मैम आप कहाँ से लाती हैं ऐसे क्वेश्चन, धरती में ऐसे क्वेश्चंस क्यों हैं? बेटा हैं, अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू सी द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हैज गिवन टू डायग्राम्स, इसने दिया है या साल्विनिया या सेलाजिनेला। मैडम वी कैन हियर योर वॉइस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू बीजापुर फॉर कंफर्मिंग। ओके, बेटा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट में आपकी आपको बताना है तो सैल्विनिया सेलासिनेला आपकी एनसीईआरटी में दिया है। इफ यू लुक एट दिस पेज, ओके, ये पेज देखो तो यहाँ पे सैल्विनिया सेलासिनेला आपको ये दिखेगा। इक्विसिटम भी है बट वो हमारा नहीं है, फर्न भी है वो फिर भी हमारा नहीं है। ओके, बट हमारा नहीं है मतलब वो बड़े बड़े हैं, हमको देखना है छोटा वाला। ओके, तो बेटा जो छोटा वाला है वो अजोला है। मैम मार्सिलिया किधर है? बेटा मार्सिलिया विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, इसमें से चार लीव्स होते हैं, ऐसे चार लीव स्ट्रक्चर। ओके, तो दैट इज मार्सिलिया। मार्सिलिया इज ऑल्सो वेरी बिग काइंड ऑफ प्लांट, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता। सैल्विनिया भी थोड़ा मॉडरेट होता है, सिलाजिनेला इज ऑल्सो मॉडरेट, मार्सिलिया इज ऑल्सो मॉडरेट। मैम फिर अजोला, देखो ये अजोला है। यू कांट बिलीव एवरीबडी इज चूजिंग डी। अच्छा, ये क्या है चूज कर रहे हैं? सिलाजिनेला चूज कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि अजोला नहीं पता था ना। यू आर नॉट अवेयर ऑफ अजोला, नाउ यू आर कंफर्म, यू आर गोइंग टू कंफर्म दैट या अजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। कैन यू सी दिस इज समबडीज फिंगर, वो किसी का फिंगर है, देखो इसे फिंगर में यहाँ पे रखा हुआ है। दैट हाउ मच स्मॉल इट इज, कैन यू सी? ओके, आपको सिलाजिनेला हाथ में मिल जाएगा भाई, ऐसे तुम उसको पकड़ सकते हो पूरा हाथ में। Selaginella। Okay, everybody who is choosing option 4, 4, 4, 4। Okay, so beta you are wrong। Okay, Azolla is the correct answer। I know that you are not aware of this, that's why I wanted to give you this information। Okay, तो बेटा ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। कुछ लोग ना अपने घर के बाहर एक बड़ा सा पॉट में वाटर डाल के इसको रखते भी हैं। ओके, एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस। ठीक है, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोला इज द आंसर बेटा। ओके, फॉर दोज पीपल हु आर वंडरिंग, अजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। ओके, इतना छोटा हो सकता है अजोला। नेक्स्ट, इन टेरिडोफाइट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज। ओके, टेरिडोफाइट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज haplontic, haplodiplotic, diplotic, none of the above। It's a very easy question, again directly taken from NCERT। Okay, I'm launching the poll, please make sure that you answer in the poll। Okay, I have launched the poll now। Meanwhile, if you answer in the chat box, I truly appreciate it। See, whenever you come to the weekend classes, you read and come। Okay, आपको उस चैप्टर को पढ़ के आना होता है। ठीक है, यू आर फेमिलियर राइट। अगर हमने फर्स्ट वीक में लिविंग वर्ल्ड किया, सेकेंड वीक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, तो इस क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम करेंगे। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एंड रीड इट। आपको पूरा एक वीक मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ के आइए। ठीक है,
गुड गुड। ओके। सो बेटा आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू हैव चूजन ऑप्शन बी, विच इज एक्चुअली करेक्ट है। चलो, ओके, आई एम एंडिंग द पोल। लेट मी शेयर दिस रिजल्ट इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट। ओके। ओके चलो बेटा, अब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसको। ओके। सो व्हाट आर द क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ, टेरिडोफाइट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके बेटा, टेरिडोफाइट्स देखो तो, अच्छा टेरिडोफाइट्स है तो फिर बहुत सारे बच्चे तो रॉन्ग कर लिए आंसर। देव आंसर इट रॉन्ग। बी ऑप्शन चूज किया था ना बहुत सारे बच्चों ने, तो वो सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। सी बेटा लेट मी टेल यू समथिंग, आप ना आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स है ना वहां पे लिख लो। ओके, हैप्लॉन्टिक में आएगा अलगी, ठीक है, हैप्लॉन्टिक में हमेशा अलगी आता है। डिप्लॉन्टिक में आएगा बेटा कुछ अलगी जैसे फ्यूकस, जिम्नो एंड एंजियो। ओके, और हमारा जो ब्रेयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है ये सारे हमारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं। ओके, अगर टेरिडोफाइट पूछ रहा है तो टेरिडोफाइट बिलोंग्स टू हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, यू माइट फील लाइक मैम ये तो इतना इजी है, बट याद नहीं आता बेटा, इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आपको एकदम पक्का होना चाहिए बहुत चीजों में। विच इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ओके, लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? गिंको बाइलोबा, साइकैस, सिकोवा, ऑल ऑफ द अबव। मैम हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि गिंको क्या है। नहीं, गिंको तो आपके बुक में है, साइकैस भी है, सिकोआ भी कभी ना कभी तो जिंदगी में सुना होगा, इट इज द टॉलेस्ट प्लांट। कभी ना कभी तो सुना ही होगा। चलो देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर देता है। बीजापुर, लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन। हाँ, हावेरी, यू आर करेक्ट। हावेरी करेक्ट, यादगिरी, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस वंस अगेन। ओके, मुझे पता है कि अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, डोंट वरी, विल डिस्कस इट नाउ। If you see which is the living fossil, okay, so ginkgo biloba is also called as maiden hair tree, okay, which is often referred to as living fossil. Okay, तो इसको बेटा living fossil कहा जाता है, that is ginkgo biloba को। Okay, ginkgo. So because क्यों इसको living fossil कहा जाता है? Because it is the only remaining representative of a perished botanical family, ginkgoaceae। perished मतलब ये जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स है ना सारे मर गए, कोई भी जिंदा नहीं है, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट एग्जिस्टेड इन द नेचर, दे आर ऑलरेडी पेरिश्ड। ओके, सो दे हैव यू नो डाइड, अभी वो नहीं मिलेंगे आपको, आपको ढूंढ के चलोगे तो आप। ठीक है, तो ओनली वन यू विल फाइंड, दैट इज गिंको बाइलोबा। ये आपको नेचर में मिलेगा एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज। बहुत पुराना ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। देखो फॉसिल क्या है, यू आर वेरी फेमिलियर विद द फॉसिल, राइट? अब फॉसिल क्या है बेटा, देखो हमारा, आप जब एवोल्यूशन पढ़ते हो तो आपको पता है कि डायनासोर्स थे हमारे अर्थ में। ठीक है, दे वर रूलिंग द अर्थ। ओके, वो फिर उसके बाद क्या आया, एक पूरा एक जैसे एक मीटियोर होता है ना, वैसा मीटियोर आया, हिट किया अर्थ को एंड कितने सारे डायनासोर मर गए। ओके, बट विच इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफी, उसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं। ओके, अब वो जो मर गए वो धरती में उनके उनके जो स्केलेटन्स थे वो पड़े हुए थे। अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उनको काम नहीं है मतलब करने को, आई कांट से दैट, बट इट इज देयर जॉब, दे आर इंटरेस्टेड टू डू इट, एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट विल, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड, नो, don't request to record, okay? The session is being recorded somewhere, you don't need to worry about that, okay? So this archaeology department will look at the dinosaurs, उनके हड्डियों को निकालते हैं, that is fossil, okay? वो fossil है, तो वो जो है उतनी पुरानी चीज है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत पुरानी है, हम लोग उनको जो नोन प्लांट स्पीशीज है इतनी पुरानी है, लेकिन इट इज लिविंग, अभी भी जिंदा है, तो इसलिए लिविंग फॉसिल। ओके, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिंको। साइकैस, यू आर वेरी फेमिलियर विद द साइकैस, इट इज अ organism belongs to gymnosperm। ओके, सिकोवा भी हमारा जिम्नोस्पर्म है, जिसका टॉलेस्ट, ओके, जो सिकोवा है बेटा, सॉरी, सिकोवा है, इट इज द टॉलेस्ट ट्री। ओके, आप ये नहीं पूछ सकते मैम एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट नहीं है, नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म में है, दैट इज सिकोवा। ओके, चलो, सो वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ algae is found in coralloid roots? Okay, coralloid roots are found in cycas,
ओके, एंड mycorrhiza रूट्स आर फाउंड इन पाइनस, दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स हैं। ओके, दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकास विल हैव विच टाइप ऑफ algae? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कोरोलाइड्स के ऊपर, कोरोलाइड रूट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली सो मेनी क्वेश्चंस। वेरी गुड शिमोगा, वेरी गुड मॉर्बी, एसर परफेक्ट, पंचवटी परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, सब लोग सही हो। ओके, तो इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, यू ऑल नो दैट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन algae। क्यों? बिकॉज जिम्नोस्पर्म हैज टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, यू मस्ट नो दैट, one is cycas and another one is spinous. Okay, cycas root is taproot system which has the association with blue green algae to fix the nitrogen. Okay, whereas spinous have again taproot system which is an association with fungi. Okay, so fungi and pinus root will make the mycorrhiza, that is a symbiotic association. वो भी symbiotic association है, दोनों मिलके जुड़ के साथ में जीते हैं हार्मोनियसली। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज जो मैंने अभी बताई है वही रहेगा। You can see this, these root tissues with blue-green algae are also helpful in producing the amino acids such as asparagine and citrulline. Okay, हाँ, which is totally absent in gymnosperm. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, which is totally absent in gymnosperm. Okay, so let me see. Very good, Jen Vishamoga. Correct answer. चित्रदुर्गा, look at the options once again. अब एक बार ऑप्शंस को देखिए। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, देखो बेटा, इफ यू लुक एट द ऑल ऑप्शंस, आपको इतना पता होना चाहिए कि देर आर टू वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ओके, तो जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग, फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग। तो जाइलम में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? जाइलम इज अगेन फर्दरली डिवाइडेड। ओके, जाइलम इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू, ओके, क्या डिवाइड होता है बेटा, आपको मैं बता दूं, फाइलम इज जाइलम इज डिवाइडेड इनटू वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, अभी आप बोलोगे कि मैम हमको तो नहीं पता, अगर पता नहीं है तो बेटा पढ़ोगे इन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे चल के विल रीड अबाउट दिस। ओके, सो यहाँ पे देखो, जाइलम विल हैव वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम fibers and then xylem parenchyma. Okay, similarly, if you see at the phloem will have the sieve tube, companion cells. Okay, companion cell, phloem parenchyma, and then phloem fiber. Okay, phloem fiber and phloem parenchyma, these four are the structures present in phloem and ऊपर वाले in the xylem. Okay, तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, which is totally absent in gymnosperm. Okay, देखो, angiosperm का xylem will have vessel, trachea, xylem parenchyma, xylem fiber, but in the gymnosperm it will not have vessels. Okay, vessels are absent in the xylem of gymnosperm. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक है, तो जो वेसल्स है बेटा वो एब्सेंट होते हैं। इफ यू सी हियर, द जिम्नोस्पर्म हैव जाइलम ट्रेकिड्स, दे हैव जाइलम ट्रेकिड्स एंड स्टिल डोंट हैव कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम लाइक द एंजियोस्पर्म। ओके, जैसे एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में कंपेनियन सेल होता है, वो भी नहीं होता इसमें। ठीक है, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। शायद ये भी पूछ सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, उसकी जगह कुछ और होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। दे लैक वेसल्स एक्सेप्ट नीटम। ओके, नीटम इज द ओनली एक्सेप्शन जिसमें वेसल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, मतलब दे डोंट हैव वेसल्स बट दे हैव ट्रेकिड्स इन देम। Okay, so trachea constitute 90 to 95% of wood in gymnosperm. Okay, what is wood? Let me tell you. Wood is an another name of xylem. Okay, bast, मतलब BAST, bast is an another name for phloem. Okay, you will read this बेटा, आगे चल के आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो 11th में, you will read it there. Okay, so answer for this question is 1 vessels. Okay, चलो, हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग करके निकलते हैं। ओके, चलो, so last question. The stamen in angiosperms is homologous to which part in gymnosperm and pteridophyte? Okay, stamen in angiosperm is homologous, which is similar to which part of gymnosperm and pteridophyte? ठीक है, अभी तुम देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर।
Okay, stamen of angiosperm. If you see the typical flower, okay, यहाँ पे देखो बेटा ये stamen है. Okay, wait, let me change the. Okay, so ये stamen है. Okay, stamen has anther. Anther के अंदर pollen sac होता है. Inside the pollen sac, we'll find the pollen grain. ठीक है. अब you have to choose the similar structure as stamen. तो बेटा अब यहाँ पे टेरिडोफाइट में देखो, it will have the sporophyll, which is like a leaf kind of a structure. Sporophyll के नीचे, beneath the sporophyll, we'll find the sporangium. Okay, so sporangium contains the spores. So here in the pteridophytes, okay, stamen is homologous to the sporophyll. Okay, sporophyll का homologous है. समझ में आ रहा है? अगर माइक्रोस्पोरोफिल का हो तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट. ओके, अगर स्पोरेंजियम किसका मैम होमोलॉगस है, अगर पूछे तो बताना बेटा, स्पोरेंजियम इज होमोलॉगस टू एंथर. क्यों? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं ना एंजियोस्पर्म्स में, उसी तरीके से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं. सो स्टेमन इन एंजियोस्पर्म्स इज सिमिलर और होमोलॉगस टू द क्लोरोफिल, sorry, sporophyll, not chlorophyll, sporophyll of the pteridophytes. Okay, and sporangium is homologous to the anther of एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, स्पोर्स आर सिमिलर टू द पोलन ग्रेन. ठीक है, अभी सेम चीज आप अगर जिम्नोस्पर्म्स में देखोगे बेटा, जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफिल्स होते हैं, वेरी स्पेसिफिकली माइक्रोस्पोरोफिल. फीमेल में मेगास्पोरोफिल होता है, मेल्स में माइक्रोस्पोरोफिल होता है. माइक्रोस्पोरोफिल इज अगेन होमोलॉगस टू स्टेमन. देखो बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज द माइक्रोस्पोरोफिल. इनसाइड दैट स्पोरोफिल देयर इज अ स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स मिलते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बताना है मैम, यस, एज यू सेड स्टेमन इज होमोलॉगस टू द microsporophyll of gymnosperm, we agree. Then what is homologous to the anther of angio, ma'am? Microsporangium of gymnosperm is homologous to the anther of angiosperms. ठीक है, सो ये आपने देख लिया बेटा. सो नाउ यू कैन इजीली आंसर दैट. 2 is the answer, microsporophyll. Okay, so there were many further questions, but we are having very less time, so we couldn't solve it. तो कोई बात नहीं. Okay, thank you so much for attending the class. Meanwhile, beta, I'm going to launch the poll. Please give me the feedback. How did you feel about the class? Okay. Okay, about the previous year questions, I'm telling you, we are going to solve that in the another class. Okay, मैं आपको practice questions लेके आई थी to, make you well aware of the concepts. Okay, you can also write it in the chat box how you felt about the class. बेटा यूजुअली देखो एक क्लास में 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब 1 घंटा में, इन 1 hour वी कैन सॉल्व 20 क्वेश्चंस एट मैक्स. फिर भी मैं ज्यादा रखती हूँ 5 से 6 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी आंसर किया होगा तो उसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो एट मैक्स 1 hour में बेटा 20 to 22 मैक्स क्वेश्चंस होता है, एंड वी हैव सॉल्व्ड 21. ओके, दैट्स अ गुड रीच. ओके, चलो, thank you so much students for attending the class, so and also giving the feedback. In the next class, please join early, okay, so that we can start early. So it's 11 o'clock. Thank you so much for being here. Take care, keep studying. For the next class, prepare and come for the animal kingdom. Okay, so plant kingdom के PYQs हम करेंगे, अभी के लिए इतना आप याद रखिए. ठीक है, चलो, thank you so much. See you in the next week. Okay, bye bye Kadapa, bye everyone. Bye bye. I could have taken more time, but I have class now. Okay, so I have class